एक्सक्यूज मी सर। चल रहा है मी आई कैन हियर यू ऑडिबल यस सर। सर यस सर ये एक मेरे को एक यस चीज सर पूछना था सर। हम्म सर ये पीटीएस से एक इक्विपमेंट वाले एग्जाम का सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सर वहाँ ग्रेड बुक में शो कर रहा है। सर नहीं मतलब क्या देते हैं इन्फॉर्मेशन सर ये पीटीएस से का जो फाइनल एग्जाम में इक्विपमेंट करके एक है सर, उसमें लेकिन कुछ दिखा नहीं रहा है, मतलब कहीं भी कि 100% कंप्लीट हो गया, लेकिन सर वो पीटीएस से इक्विपमेंट का फाइनल एग्जाम कहीं शो नहीं कर रहा है। रिजल्ट नहीं सी दिखा रहे हाँ सर, वो एक एग्जाम ही नहीं दिखा रहा है, इक्विपमेंट करके जो है सर। किस सीसीए ने कौन सिक्स सा वन में सर। 1 8 मिनट सर और पीटीएसए में मैं कल ग्रुप में भी भेजा था कि मतलब जैसे कि कोई अगर क्वेश्चन वायर में कनेक्शन चेक कर रहा था, पहले शेल्फ पे रखा हुआ था राउटर और स्विच, तो उसमें कनेक्ट नहीं हो रहा था। सर मुझे लगा कि नहीं हो रहा है, तो मैं दूसरे पीसी में कनेक्ट किया, तो फिर वायर डिलीट भी नहीं कर पा रहा मैं। किसका तुम बात कर रहे हो ये वाला स्किल एग्जाम पीटीएस आईपीएन पीटीएस स्किल एग्जाम हाँ ये सर ये और सर हम्म सर इसमें थोड़ा मेरे साइड से एक प्रॉब्लम हो गया था सर, स्किल एग्जाम में फाइनल वाले में। क्या प्रॉब्लम सर मेरे घर में असल में कल मैं जब सबमिट कर रहा था ना, तो मेरे घर के बाहर से जो वाईफाई का वायर आ रहा था वो टूट गया था सर। एक बड़ा हैवी ड्यूटी ट्रक जा रहा था तो उसी में टूट गया था, तो सबमिशन टाइम सर इशू हो गया था, तो मुझे दूसरी बार अटेम्प्ट टेस्ट करना पड़ गया था। आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो सर फाइनल एग्जाम भी 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं? नहीं 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 फाइनल मतलब पीटीएसए का फाइनल है। हाँ हाँ एमसीक्यू जिसमें रहते हैं वो सर लास्ट एमसी फाइनल सर एमसीक्यू में जो फाइनल एग्जाम में तो सर एक ही अटेम्प्ट में मेरा हो गया था, लेकिन इस वाले में सर मेरे को 2 अटेम्प्ट देना पड़ गया था फाइनल स्किल एग्जाम में। पता है ना अस्सी ये है तुम्हारा लास्ट इसको एक अटेम्प्ट में कोशिश करना तुम लोग 70% से बतलाने की ये है तुम्हारा फाइनल एग्जाम जहाँ पे लिखा है फाइनल एग्जाम और हाँ ये क्या है फाइनल स्किल एग्जाम हाँ ऐसी है सर। your final इस skill exam and this is your final exam course final exam so here सर there is no one attempt just हाँ try सर। to get more than 70% yeah सर फाइनल स्किल एग्जाम में मेरे को इशू हुआ था, मेरे को उसके कारण सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ा था उसमें। ठीक है तुम दो देखते हैं वो लोग क्या कंसिडर करते हैं नहीं अगर नहीं कंसिडर करेंगे तो मेरे को आएगा लिस्ट लोग का किसका हुआ है किसका नहीं कंसिडर हुआ है यस अगर सर। हो जाएगा तो अच्छा है तो नहीं होगा तो फिर बात करेंगे ठीक है सर, थैंक यू। डालना तुम कि किस वजह से क्या हुआ था तुम्हारा इस कैन ड्रॉप मी मेल विथ योर नेम रोल नंबर अटैक आईडी एवरीथिंग इसी ऑपरेटर Okay, so yeah, another question like what you're facing like you are not able to connect the wire. Just share your screen. I can check it because here maybe see if you are जस्ट अ सेकंड सर, आई लॉग इन एंड डू एवरीथिंग। Sir,
Sir, should I share my screen? वो है इसीलिए। तो सर
तो उसमें भी मतलब कि बोला था कि लेफ्ट हैंड वाला जो शेल्फ है वहां से सारे सामान को उठा के राइट हैंड साइड करना हो, लेफ्ट हैंड साइड करना होगा। क्योंकि उसमें ऊपर में तुम देखोगे एक पावर रेल टाइप का कुछ लिखा हुआ है, तो उससे उसके थ्रू उन लोग में पावर जाता, तभी अच्छा तुमको करने देगा, वरना तुमको वहां शेल्फ पे रखे रखे में कनेक्ट नहीं करने देता है। अच्छा, ठीक है, वो मुझे पता नहीं था कि उधर। ठीक है, थैंक यू सर। चलो, let's start with the next topic. Any other doubt we have? So I have extended, guys, for your previous exam, checkpoint exam, which you have asked in the group. You can check from your end. सर Yeah, tell me. सर सीसीएनए वन का जो कोर्स फाइनल एग्जाम है उसमें भी 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं ना, लाइक उसमें अगर एक बार भी नहीं हुआ तो, इन नहीं, केस। नहीं, स्किल का तुम दे सकते हो, उसमें कुछ कुछ बच्चों का टेक्निकल एरर आ जाता है तो वो अलग केस है। लेकिन ये जो एमसीक्यू वाला जो एग्जाम है, जो फाइनल एग्जाम जो मैं अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, उसको एक अटेम्प्ट में ही करना। जनरली वो लोग फाइनल एग्जाम को कंसिडर करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद जितने भी अटेम्प्ट दोगे वो स्कोर तुम्हारा कुछ वैलिड नहीं रहता है। तो इसलिए you should prepare first before going for your final exam, and then give it accordingly and try to get more than 70% marks. That is very important. ओके इसमें सर। सर खाली बाकी फाइनल, चेक पॉइंट एग्जाम के लिए तो 2 अटेम्प्ट है, बाकी हाँ, सभी एग्जाम के लिए। वो सब दे सकते हो, 2 अटेम्प्ट दे सकते हो, बट जिसमें खाली लिखा है कि फाइनल एग्जाम ऐसे करके लिखा है, कोर्स फाइनल एग्जाम, उसको कोशिश करना कि तब अगर कोई टेक्निकल इशू जैसे हो गया, किसी का लैपटॉप क्रैश हो गया या कुछ बहुत बड़ा मेजर कुछ प्रॉब्लम हो, वो अलग केसेस है, वो पता नहीं कंसिडर होगा नहीं, आई कैन नॉट अश्योर। बट हाँ, you have to assure that like you should get more than 70% in the first attempt. That is for CCNA exam. Final anybody was asking anything? I was not there connecting charger. भाई तेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। Am I audible, guys? यस सर। यस सर। Yeah, so in the previous class, we have completed the topology for your frame delay, and we have entered the del C value. I hope you all have done till that. So open the previous file where you have saved that.
Just check the connection. That is restored or not. Just verify it once. Yeah, but this values is there. PL1. Okay, frame relay, just check it. Yeah, everything is there. So you can also check it from your side. So you have saved up properly or not. If you have missed that, then you have to do it again. Now what we'll do, we will go to the particular router. Suppose I will start from router 1 to the CLI. So just hit the configuration mode, or first check the IP addresses if you want to check whatever IP which you have configured. So you can type the command. So IP int brief. So any IP have you assigned? No. I mean, no IP were assigned till now. Okay, so I have to go to the configuration mode and I need to assign those IPs, right? So before assigning the IP, I need to make it the port on and add the encapsulation frame relay, because here directly we are not giving the link, I mean, creating a connection between the different routers. So no physical connection. Logically, we will create the some interface and where we will connect the different routers and we'll give the IP to that, right? So let me just change the host name. This is our first router. So we have to go to the configuration mode first. So that is our host name. Now just check with that interface SC 0/0. Now you have to add the command encapsulations frame relay, because we are going to configure the frame relay. So simply have to type encapsulation. In cap, if you type this, the tab, it automatically will come to encapsulations. Frame tab, frame relay will come. Okay. And just hit enter after this. You need to write anything, just check it. No need to type anything more, sure. Yeah, it's clear. So just simply press the tab, encapsulation frame relay, hit enter. Now frame relay, just use the element type. We have used element LMI type. What was the LMI type is? Which type we have used? Can anyone tell me? Cisco. Cisco. So LMI hyphen type Cisco. It make it no as such. Done. Now you have to go to the interface. So you can exit from here. Just simply go to the sub interface. So int sc 0/0. How do you create the sub interface? So what I have to write 0/0.1. Yes or no, guys? For the sub interface, we have to write that .1, .2 like that way, right? You have seen, I think, this type of we have created when interlink routing I was teaching you at that time. I hope remember when we are creating that sub interface at that time, like serial space SC 0/0.1.2, like that way we are writing it. So the same way here also you have to do for the sub interface. Just write serial 0/0.1. Give question mark which type of frame relay you are going to configure, point to point or multi-point. So we'll So this start with is the, the sub interface for serial 1. Like, yeah, this is serial 0, this one. This I'm in the router 1, this here. Router 1, which interface is connected? Serial 0/0. So that's why I'm writing it 0/0.1. If I'll be on the serial 0/1, so there I'll write serial 0/1.1, 1.2, 1.3, like that. So I have to do it with a point to point. 0/0/0.1, point to point I'm configuring here.
So that is, in this interface, which IP I have to use, guys? Can anyone tell me what should be the IP address? IP address. Do you remember the previous topology? What IP I have given to the first interface? 10 dot. What was the IP? 10.0.0.1 255 dot 0.0.0. Yes or no? So this is the case. Like just let me revise that things. Like you might be forward. Just see what exactly we are doing it here. Just see here from the router 1 to router 2, I'm connecting one link. Okay, from this side to this side, and router 1 to router 3. Okay, so two sub interface I need to create, because connecting router 1 to router 2 virtual link. For that, there will be a one interface IP will be there, sub interface IP. Like suppose I am using 10.0.0.1, right? So for this 10.0.0.1 and this side 10.0.0.2 it will be, and similarly for this side, well connect. So in this side, what I have to write? Maybe any other IP I can use. Maybe 20.0.0.1 for this interface, and for this side 20.0.0.2. So actually, we are not connecting any cable, but logically we are configuring some of the sub interface IP, right? So that they can have a communications. So here, if you'll type the IP like 10.0.0.1, so that is the link which will be going to connect the router 2. Right, that IP, that is the one of the sub interface IP which I have assigned here, and that will connect to the router 2. If I'll write 20.0.0.1, so that will connect to the router 3. Like that way you have to proceed. So just simply you have to write that IP address as usual, like how you're writing it to the particular interface. So in the sub interface also you have to enter in the same way. So here you can see that mode has been changed. It's a sub. If it means that you are on the sub interface, right? And give the IP. This one done. Now you have to mention the del C values. What you have mentioned del C value on the cloud. So I hope you remember. So what was your del C values? Just let me know. On the frame relay interface del C, just if you press the tab, automatically you will take that del C, because the next part is after frame relay del C value you have to assign. What was the value, guys? Can you tell me? Router 1 to 2. What was the del C value? 102. 102. So you will type it here 102. Done. Similarly, you have to create another sub interface int sc 0/0.2, right? And sorry, second sub interface. You can exit from here. Okay. int sc 0/0.2. Sorry, what is saying that? So point to point. sc 0/0. Okay, I have missed that one command. Point to point I haven't mentioned. That's why it's not taking. Int sc 0/0.2 point to point. Just type it. Yeah. Now see here. Well, if you'll be configuring the point to point, so now the next thing is that I need to go to that sub interface and I have to type that particular IP from the router 2 to router 1 to router 3. So here, if you see, the first router I have given, like router 1 to router 3 connections, the IP was 10.0.0.1. Now what I'll do, I'll connect router 1 to router 3. So for that, suppose I'm using IP like 20.0.0.1. So here you have to type the same IP, like just you have to change that from 10 to 20. Just to make changes, right? Just hit enter. Done. IP has been assigned. Now again, the next command is for the del C values.
So what is the command for del C value? Frame relay interface del C. And what should be the value, guys? Router 1 to 3. What value we have assigned? 103. Hit enter. Done. So router one part has been done. Now we will check with the router 2. Which interface is you are typing the same interface. And go ahead with the encapsulation frame relay command. Encap, then frame encapsulation frame relay. Choose the LMI type. Frame relay. We just press tab, you'll get that. And the LMI is our Cisco. Then simply you have to go to the sub interface now and enter the IP address. So what is the command for this? int sc 0/1 here type and we have configured IP address. Just tell me what should be the IP address. I'm connecting the router 2 to router 1. What IP should I type? 10.0.0.2. Very good. Followed with subnet mask. So done. So if you have entered the IP, just hit enter and just enter the del C value as well. Just go ahead with the del C value, frame relay, and interface del C, right? 201. 201. Done. Similarly, one more sub interface I have to also add because that is connected to the third router. Router 2 is connected to third router. So I have to add one more sub interface. So what is the command? int sub interface. So I have to write sc 0/1.2 and 2. So I need to mention point to point as well. sc 0./1. Tab is not okay. Now just enter the IP address. Now so
So just type the IP address, what it should be, guys. IP 30.0.0.1, because this is the IP which is connected to the third router. Followed with subnet mask 255.0.0.0. Done. And then just give that for this connections 223 LC values. Just use the previous command LC values one. What I'll write here, LC value, what it should be for the third router. 30, it's a 203. Yes, 223, I mean 30 or 203. That's why I've given the name like that, so that easily you can remember. 122, 102, 221, 201, 223, 203, 322, 302. But it's not like I mean, when you go for the service provider and ask the LC values, they will not give values like that. For this, it can be any values. But for the understanding, we have used this value to remember those things. Okay, so you can see the all your code also. To write do write. If you not save, also by default, all those things will be saved in your packet reference. And you can just type command do write, it will be saved as well. Just to move ahead with the do write, WRIT. Just type that quantity gap in which router. Let me check third router, I think. Okay. So just change the host name. RT. So same thing, you have to do it here also. Have I made it put on, guys, of the previous router? Router 2. Did I write the command no sh? Yeah. Here just go to the interface. INT SC 0/ I think 2 it will be. Just check that. Yeah, and so serial who is the okay. So only yeah, now it's fine. Yes. 0/2 is there. Okay. Here just see guys one thing. Here it's not written 1/1 or 2/1 in the cloud. Can you see? It's only written serial 1 to 0 like that way. Okay. Whenever you wanted to enter to the interface, na, so you have to first check with that whether you are screen stuck. Is it like that, guys? My screen is stuck. I mean, from your side or from is it 0/2? 0/ yeah, serial 0/2 is like for the router, and here if you see on the cloud it is mentioned that just let me show you serial 2 only. Okay, so make sure that you are checking it with the router because we are all the configuration we are doing with the router. Cloud part done already. We have entered LC value, right? So we have to check with the router only serial interface. So just go ahead with that the serial 0/2 and just make it no sh. You can check with that all the ports are on of the previous router. देखो ये सब पोर्ट अभी सारे राउटर का ऑन हो गया है. पूरा रेड था पहले ये सब ग्रीन हो गया है. फिर से वही कमांड चलाना है हमें इनकैप्सुलेशन वाला. इनकैप्सुलेशन फ्रेम डिले एंड LMI टाइप डाल दो. फ्रेम डिले LMI टाइप
is usual Cisco, sorry, just LMI and hyphen type. Just the sub interface and empty SC0/ just see here, your name is changed like 0/2.1 you have to type and just click point to point. So for writing point to point, you can even you write P also it will work. ये देखो P टाइप करने से भी आता है point to right. So return this, then just enter the IP address. Now I'm in the sub interface. So here what it should be the IP address. Can anyone tell me? ये मेरा थर्ड राउटर पे हूँ. थर्ड राउटर को किससे मैं पहले कनेक्ट कर रहा हूँ? सेकंड राउटर से फर्स्ट राउटर से करो. अगर मैं सेकंड से कर रहा हूँ कनेक्शंस तो आईपी एड्रेस मेरा क्या होना चाहिए बोलो? आईपी एड्रेस 3.0.0.0.2. वेरी गुड 255.0.0.0. Done. Now you can hit enter after this. The next thing is that I have to configure LC values. So frame relay and interface LC. What it should be the values, guys? 301. 302. 302. अरे 3 से 2 को कर रहे हो ना, तो 302. 1 कब होगा? जब फर्स्ट को. अभी मैं फर्स्ट को कनेक्ट नहीं किया, अभी मैं सेकेंड को कनेक्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट के टाइम में 1 बोलोगे. सर लेकिन 20 तो हम लोग यहाँ से लिए थे ना. 21 से 2 Okay. 1 से 3 था सर. हाँ क्या था? 20 तो था सर राउटर 1 से 20 3 वाला था. 1 से 3 के लिए लिए थे आप. 20 वाला 1 से 3 के लिए लिया था. नहीं एक मिनट रुको, तुम लोग को जस्ट मिनट. मैंने 1 राउटर का ये 10 वाला लिया था 1 से 2 के लिए और 2 से 1 के लिए था. ओके. और इधर जो है मैंने 20 तो से 20 लिए थे. और 2 से 3 के लिए अच्छा 30. 2 से 3 के लिए 30 लिया था. 30 का सीरीज. Yes. ओके जस्ट वे. तो हम लोग अभी तो कनेक्ट क्या डेल्सी वैल्यू मैंने डाला था, सॉरी आईपी अभी इससे पहले डाला था मैंने 20.0.0.2. ओके. तो अगर 20.0.2 डाल रहा हूं मैं, तो इसको किसको कनेक्ट कर रहा हूं मैं? 1. मैंने इस इंटरफेस राउटर 2 का जो इंटरफेस जो मैंने दिया था 2 से 3 के लिए क्या आईपी डाला था? 30.0.0.1. अच्छा, तो 2 से 3 के लिए 30 डाल दिया है. ओके. तो फिर 2 डालना पड़ेगा, 30.2 डालना पड़ेगा फिर. ठीक है नहीं आओ. तो यहाँ पे तुम डालो, जस्ट वेट. तुम लोग जो है यहाँ थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा. जस्ट वेट. तो यू फर्स्ट रिमूव दैट previous IP, no IP address. Go to that previous. I'm on the frame relay. सर अगर Okay. ये वाले सब इंटरफेस को 1 से ही लिंक रहने देंगे तो मतलब कुछ दिक्कत होगा क्या? नहीं जस्ट वेट. देखो मैं अभी ये जो वैल्यू लिया 2.1 पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा ये इंटरफेस 2.1 और 2.2 में मैं कनेक्ट करूंगा. तो 2.1 को सपोज मैं राउटर 2 से अगर मैं 2.1 को राउटर 1 से अगर कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है. तो अगर राउटर 1 से करोगे तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या डालना पड़ेगा. यहाँ पे राउटर 1 में मैंने राउटर 3 के लिए क्या लिया था? आईपी 20. 20.1 लिया था, राइट. तो 20.2 अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट यहीं से हम लोग चेंज कर देते हैं. जस्ट वेट. यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो ये जो आईपी जो डाल दिया रहने दो.
20.0.0.2 ले लिया है, मतलब मैं अभी इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, किसको, राउटर 1 को। तो राउटर 1 के लिए अब मेरे को डेल्सी वैल्यू डालना पड़ेगा। तो राउटर 1 का डेल्सी वैल्यू क्या था वो मुझे बताओ। 301 थ्री टू 301 मतलब 301 लेंगे, ये सुन लो। तो यहाँ पे अब हम लोग डेल्सी वैल्यू 301 डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोग एक काम करो, वही कमांड चला दो जैसे एज यूजुअल वाला, फ्रेम डिले, जस्ट वेट, फ्रेम डिले, और तुम्हारा जो डेल्सी वैल्यू है इंटरफेस, okay, and this is for my first router, remember this. If I am connecting the first router, so I have to use a LC value 321. I mean 321 means what? 301, right? Everybody agree, guys? Any doubt? Any confusion now? Sir, I already entered 302, so what should I do? Okay, so 302 नो and कमांड करके see our IP, what you have to enter? You have entered IP 20.0.0.2. Yes, sir. Okay, then just remove that. In this case, no frame relay interface DLC, and that just type the values. It will be removed. Just write the command no before of that your actual command. It will be removed, Sir, and then by mistake I entered the wrong IP address. So if I write no IP address, will that remove that wrong IP yeah, it address? will be removed. Yes, 301. Okay, done. So similarly, just do it for the other interface. Sir, INT. Yeah. Tell me. sir, should I type no frame relay interface DLSI 302? You have entered 302, right? Yes, sir. Yeah, so then type no frame relay interface DLSI 302. Okay, So sir. it will Thank remove you. and then just rewrite that command. 301, just make it. Okay, so here what I'll do, I'll create another sub interface. Previous time 201 I created. So now let's go ahead with that serial 0/2.2, right? And here just mention point to point. Type P, it will come automatically. Or not. Let me exit here. Let's just exit it. Type int sc 0/2 dot 2 sp. You can enter. Now you're in the sub interface, right? And the next thing is that we have to now go ahead with the next IP for the router 322. So what is the IP? Now tell me. IP address. What is the IP, guys? 30.0. 30.0.0.2. Yes, sir. And the subnet mask size is 1. Here it is in my packet recitation unable to create frame relay means in the config subif mode I entered intsc 0/2.2p. After that I exited from it and again entered the interface, but then it is showing unable to create frame relay. No, just exit first. First exit. Be in the global configuration mode. Then type the command. It will work. Just see on the screen. First, here you have to exit. Don't write the point to point again. Just write int sc 0/2.1. Then you can enter. Yes. Just check with that. So here, just we are in this 30.0.0.2. Okay, and that third router is connected to the second router, and accordingly I have to give the DLC values. Just move ahead with the next one. Frame relay. Sorry. Value is DLC third to second. I mean 302. Done. This one also we have configured. Now, after completing this, what we will do, if we'll try to ping, just let me check.
whether directly connected devices are pinging or not. I'll go to the router 1. Just type it here. Here just type the command ping 10.0.0.2. So 100% success rate is coming. Means that's pinging. If you will type again ping on 1 dot, let it be 20.0 dot. What IP I have used from the router 1 to router 3? I think 20 dot I have used. 20.0.0 dot. Let it be 2. Let pinging. Yes, that is also fine. 100% success rate we are getting it. But if I type the command ping 30.0.0.1, will it ping? What is your answer, guys? Will it ping this 30.0.0.1? So my 20.0.0.2 is not pinging. I think you have 0% success rate. wrongly have assigned this 20.0.0.2. You have assigned to the neighbor network. That's why it's not pinging. Because directly connected network router has this kind of features. Like directly connected network, it will ping. Only the network which is a neighbor one, I mean indirect connections of network, without configuring the any routing protocol, it will not ping. So just see, let me I'll show you. If I type the command ping 30.0.0.1, so you'll get that failure here. Just see. Success rate is 0%. Can you see? Previously it was 100% was coming with the direct connections. I mean direct connections of the router. But if I'll connect, if I'm typing that, some of the IP which are indirectly connected, just look at here. Let me analyze. So here the IP, let me write that so that you not get confused. 10.0.0.1, and this one was I think 20.0.0.1. And for this 10.0.0. was 2, and this one was 30.0.0.1. This one was your 30.0.0.2. This one was 20.0.0.2. So that was our IP configurations, right? So here, if you'll connect 0.0.1 and 0.0.2, 10.0.0.2, these are the directly, I mean, from the same network only, these are the links has been directly connected. Virtual link you have created now. So this network, 10 series network and 20 series network, which has been assigned to this router, two sub interfaces. So that's why you are able to ping 20 series and 10 series. But when you will try to ping this 31, this 31 is connection from router 2 to router 3. There is no direct link from the router 1. So if you try to ping from the router 1, it will not ping. But if you ping from the router 2, so 10 series will ping and 30 series will ping. But 20 series, those who are connected over this side, this one will not ping. Because again, for this topology, this network will be the what? It's the indirect connections. So in this case, what things we can do so that it will get ping from the all networks? What is the solution, guys? Can you tell me? The routing protocol. Sir, implement any routing protocol. Yes, so we have to configure the routing protocol in all the routers, right? Any routing protocol you can use. So the simplest one is RIP. So I'll just going in with the RIP few commands only required to write. So conf t, So right? can you check my router 3 months because that IP is not pinging. Router 3, what IP you have entered? This two IP you have entered 20.0.0.2 and Yes, 20 to sir. 30.0.2. Yes, 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 yes. Share your screen. Yes, yes.
to the router 3. Type the command buso IP INT brief. Punished. Yeah. So say Exit from here first. ये तुम्हारा आईडी को असाइन ही नहीं किए तुम। 2.1 पे अनसाइन आईपी है, कैसे पिंग करेगा? 2.1 अनसाइन है, ओनली तुमने 2.2 पे ही आईपी डाला है। 2.1 पे डालो। 2.1 पे क्या होगा आईपी? में 20.0.0.2 वाला, 30.0.0.2 वाला जो है, ये कनेक्शन था 2 से 3 का, और 2 से 1 वाला कनेक्शन वो तुम्हारा मिसिंग है। तो जस्ट टाइप द कमांड int se sorry 0/2.1 type p, hit enter. Yeah, now type the ip address 20.0.0.2 255.25 255.0.0.0. Yeah, enter. फिर LMI डालो, फ्रेम डिले इंटरफेस डेल्सी, अपर एरो प्रेस करो, आ जाएगा कमांड, वो होगा तुम्हारा। हाँ एक मिनट, ये आया तो बैक बैक जाओ। 302 डलेगा। हाँ बस जस्ट वेट। अब यहाँ पे जो है तुम्हारा, ये किससे कनेक्ट कर रही हो तुम? 3 से, ये 23 से 1 को कर रहे हो ना, तो यहाँ पे 301 डालो। सर लेकिन आपने जो टोपोलॉजी बनाया उसमें तो 23 से 2 कनेक्ट करता है। 20.3 से, एक मिनट रुको, मेरा टॉपोलॉजी को देखना है तो जस्ट वेट, मैंने क्या लिखा था? 3 से 20 वाला, 3 से 2 को तो 30 कनेक्ट कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ गो अहेड, तुम शेयर करो स्क्रीन, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये हो गया 301 या डन। फिर उसके बाद जो है इसको क्लोज, ये एग्जिट कर दो, डू राइट डाल दो। अभी तुम जो है पिंग करो, अभी इसी राउटर में पिंग करो। रुको रुको रुको, एक मिनट। वो राउटर तो पिंग करेगा, उसमें इशू नहीं था ना, राउटर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, राइट? राउटर 3 में है ना इशू तुम्हारा, हुज शेयरिंग स्क्रीन। हाँ 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 हाँ। So now you can try to ping a directly connected network from router 3. Go to the enable mode. नहीं सर, 1 से पिंग नहीं हो रहा था, एक IP 3 से 1 to 3 नहीं हो रहा था। 1 2 3 क्या आईपी डाल रही हो? फिर से जाओ, राइट राउटर 1 में जाओ, जस्ट वेट, गो टू द राउटर 1। तुम कौन सा आईपी पिंग करने की कोशिश कर रही है? 30 डॉट कैसे पिंग होगा? 30 डॉट तो तुम्हारा ये है ना, नेबर है, नेबर नहीं पिंग करेगा। अभी तक तुम आरआईपी पे ये नहीं किया, कॉन्फ़िगर नहीं किया, ये कोई राउटिंग प्रोटोकॉल डालोगे उसके बाद होगा वो। 20 होगा, 10 सीरीज होगा 100%। हाँ ठीक तो है, 20 वाला हो रहा है, 10 वाला चेक करो, 10 वाला भी होगा तुम्हारा। 10.0.0.2 डालो, ये भी होना चाहिए। हाँ हो तो रहा है, ठीक है तुम्हारा। ओके सो जस्ट सी हियर गाइस, नेक्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू कॉन्फ़िगर, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Right now we have to go to the each and every router and just immediately configure RIP. RIP is the simplest routing protocol, immediately we can configure, right? So just go to the config mode and just start typing all the network details. I am in the सर one, so I have to type router RIP. हाँ बोलो। सर हम लोग क्लॉक रेट कहाँ पे डाल रहे थे? क्लॉक रेट का जरूरत नहीं है। क्लॉक रेट देखो यहाँ पे क्यों नहीं डाल रहे हैं मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को बताया था कि अगर सीरियल डीसीआई केबल जो है, मैं अगर पहले क्लाउड को कनेक्ट कर दूं
तो मुझे क्लॉक रेट क्लाउड में क्या होता है कि जितने भी उसके इंटरफेस होते हैं सारे को बाय डिफॉल्ट क्लॉक दिया रहता है। मतलब फिर से आपको क्लॉक रेट जो है देना नहीं है, अगर पहले क्लाउड से कनेक्ट कर देते हो उसके बाद राउटर को करो। Okay, लेकिन अगर कोई जो है राउटर को केबल को पहले राउटर के इंटरफेस को पहले कनेक्ट किया फिर जाके क्लाउड को कर रहा है, तो फिर ये क्लॉक जो है ये शो करेगा कि इधर राउटर के इंटरफेस पे, तो फिर उधर क्लॉक रेट देना पड़ेगा, मतलब राउटर के इंटरफेस में डालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो और क्लाउड से कनेक्ट कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्लॉक रेट है, तुमको कुछ चेंज नहीं करना है। तो देखो इसलिए राउटर का हर okay, sir. इंटरफेस कोई भी क्लॉक शो नहीं कर रहा है, देख रहे हो ये इंटरफेस पे भी क्लॉक नहीं दिखा रहा है, यहाँ भी क्लॉक नहीं दिखा रहा है, यहाँ भी नहीं दिखा रहा है। कहाँ पे क्लॉक शो कर रहे हैं? सारे क्लॉक शो कर रहे हैं क्लाउड के ऊपर शो कर रहा है, और क्लाउड में तो ऑटोमेटिक क्लॉक दिया हुआ है तो तुमको कुछ चेंज करना ही नहीं है। जस्ट हियर next is just type the command router RIP and it enter, give the all the network ditches. So what are the directly connected network here in the router one? क्या क्या नेटवर्क है बोलो जल्दी फटाफट तुम लोग। 10.0.0.0 एक है, एक और नेटवर्क था हमारा नेटवर्क 20 डॉट वाला है 20 वाला sir, 20 वाला. 20.0, राइट, इसको एंटर कर दो। नाउ लेट्स मूव बैक विद द नेक्स्ट राउटर। नेक्स्ट जो केस है okay, this one done. This is for router 1. Okay, let's move ahead with the router 2 and router 3. So it's the same thing. राउटर 2 में 1 में था, राउटर 2 में 40, and here again type router RIP, give the network detail, network. What are the net directly connected network, guys? Tell me Sir, in the router. 10.0.0.0 and second was 30.0.0.0. 30 dot. Very good. हो गया ये भी, एग्जिट कर दो, डू राइट मार दो, डू राइट, done. Now move ahead to the next one, third router. Same thing, enable on T and the net router RIP. Just give the detail of the network. Network. What are the network? 20 is this 20.0.0.0. And next one, guys, tell me. Sir, 10.0. 10 or 30? Router 30. Sir, 30. 30.0.0.0. Done. अब तुम लोग पिंग करो, सारे राउटर पिंग करेंगे। मैं सपोज हूँ फिर पे राउटर 1 में हूँ, यहाँ से एग्जिट कर लेते, एग्जिट कर लो, एग्जिट, यहाँ पिंग डालना है कमांड तुम्हारा प्रिविलेज मोड में। एंड पिंग किसको पिंग करे? 30 वाले को। 30 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो उसका चेकिंग, डायरेक्टली कनेक्टेड तो पिंग कर ही रहा था तो हम लोग चेक कभी करेंगे इनडायरेक्ट कनेक्शन। 30.0.0.2, तो देखो 100% आ गया सक्सेस रेट। कैन यू सी 5/5 पैकेट हैज बीन सेंड, 100% सक्सेस, राइट? If I'll ping like some other devices of ping 30.0.0. another interface I'm just pinging 1
This one is also pinging. Now it will happen in all the routers, not only in the router one. So it will try to, let's see, will try to ping from router 2 to router 1 through neighbor interface. So I will type what I have to type. Here is directly connection in 10 or 2030. So if for 1030, then use that 21, 20.0.0.2, right? Yeah, that's also pinging. Similarly, you can check it for the other routers. I mean, for the third router as well. Just exit from here. Exit. Now just ping it. Ping. What is the values? Neighbor is 10. So 10.0.0.2. That's great. Everything is pinged. Okay, guys. So like that way, you can configure frame delay. And now the next thing is that your homework will be in the next assignment 5. I will update it. You have to connect some devices. Let's see, you'll create a one frame relay topology like that. Okay. And you will add switch here. Just see, we'll connect some of the switch, one switch in each router, and connect three devices, right? Three PC will connect it. This side also. Done. And connect this port and try to make a communication from different networks and their PCs. Simply you'll connect this port as usual. I mean, it's connected straight through cable. Connected, I think it's let's check this. तो ये क्वेश्चन और एक बार रिपीट करेंगे? Yeah, question is that in the assignment 5, you have to, which port I have to connect, guys? Fast Ethernet, right? So just see in the assignment 5, what you'll do, you'll configure a frame delay configurations, and you have here, in this lab, what I show you, only I have connected the router and the cloud. But your task is that along with the router and cloud, you'll connect some PCs and the switches in each router, and you'll try to make a communication from the different PCs, like maybe PC0 to PC3, or PC8, PC7 to PC4, or PC2. I mean, different networks communication. Along with that, if you have any directly connected networks on the router or indirect connections in the router, so all the communication should happen. So even you are sitting from the PC0 and you try to send a message to PC8, and this PC8 is located in some other place, right? So that device should also get a packet, and that device can also reply back to your PC, right? Like that way, you have to make a communications. So this is all about that entire WAN communications, wide area network communication. If you have different branches of your company in different locations, maybe in Hyderabad, Pune, or Singapore, like that way, and you wanted to have a communications, so you have to use this type of MPLS or frame relay communications to get it messages, and your sender will send a message and receiver will reply, or receiver receive the message and reply back to sender. So like that way, on the wide area network, this type of communication happens over internet, right? So that configuration you have to do it in the next assignment, in assignment 5. So I hope it's clear to all. So this is your question. You can write it down, this scenario, and you need to complete it, and you will upload in the classroom. Sir, PC IPs we can assign by ourselves. Yeah, PC IP you can assign from your side. Excuse me, sir. Otherwise, I can help you on that IP. Maybe you can take 198, 192, that 168, or like that way, or different network. Just connect. Don't use the same network for this.
otherwise it will create a congestion in the network. So do one thing, you use that, either you can use subnetted network if you want, like you can use the subnetted. How many networks are required here in the subnetted cases? So can you solve this the problem with the subnetted network? I will, I will add in this assignment. Like, see, how many networks are required? Can you tell me total how many networks are required, guys? Just calculate it ना here. कितना नेटवर्क चाहिए हमें, बोलो? 6. तो देखो, एक 3 तो 6. इसका हो गया, 1 2 3, और 3 3 इन लोग का है ना? तो 6 नेटवर्क टोटल चाहिए। तो सबनेटिंग करना, एक ही आईपी से सारे को असाइन करोगे। सबनेटेड नेटवर्क कन्फर्म करो। जब तुम लोग क्या करोगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने सबनेटिंग ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है? तो मैं एक आईपी दे दे रहा हूँ, उसमें सबनेटिंग करना तुम लोग। जस्ट वेट, लेट मी गिव यू वन आईपी, लेट इट बी 200.10. थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन है इनडायरेक्टली पीसी को भी पिंग करना पड़ेगा, राइट? ये नेटवर्क में। यस, पीसी को करना है, बट सबनेटेड नेटवर्क यूज करना है। देखो आईपी क्या असाइन करोगे, जस्ट सी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 200.10.10.0/24, ये मेरा आईपी एड्रेस है। तुमको 6 सबनेटेड नेटवर्क बनाना है। इससे क्या करना है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। 6 सबनेट्स क्रिएट करना है तुमको, और आईपी सबका चेंज होगा। देखो अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, ये वाला काम नहीं आएगा तुम्हारा, सब चेंज करना पड़ेगा आईपी तुमको। 6 सबनेट्स तुमको बनाना है, ठीक है? अभी ये जो 6 सबनेट होंगे, सब जो आईपी मिलेगा, हर एक एक सबनेट में कुछ कुछ होस्ट असाइन कर सकते हो, राइट? तो वो जो होस्ट का आईपी होगा, वही आईपी को तुमको कहाँ असाइन करना है, हर एक एक इंटरफेस ऑफ राउटर को देना है। और उसमें से देखो, उसका एक एक आईपी रहेगा, जैसे जो कि डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन करेगा, राइट? और उसी आईपी के अंदर जो होस्ट आईपी है, वो पीसी को फिर दोगे। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? यस सर। तो जो हमारा होस्ट का आईपी रहेगा, जैसे तुम लोग सबनेटिंग में कर रहे थे ना कि यूजेबल आईपी फॉर द होस्ट, तो यूजेबल आईपी फॉर द होस्ट जो होगा, वो इन पीसी को देना है। PC0, PC1, PC2 को एक सबनेटेड नेटवर्क इसके लिए ले लोगे। सर लेकिन दूसरा, इतना आईपी एड्रेस ही नहीं होगा इसमें। क्या? सर ठीक, लेकिन हो इतना। जाएगा। तुम्हारा कितना, हाँ 6 है ना सबनेट? हो 6 है जाएगा। तो हाँ, 3 बिट्स। 3 बिट्स होगा, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? ओके इसको ओके चेंज सर। करके काफी मिलेंगे तुम्हारे होस्ट, इसको करोगे, ठीक है? और सारे आईपी को ना सबनेटेड, तुम्हारा जो जो न्यू सीआईडीआर वैल्यू आएगा, जब जब तुम सबनेट मास्क असाइन करोगे, देखो इसमें भी तुम लोग को ये बता दे रहा हूं, नहीं तो यहाँ पे तुम गलत कर सकते हो। देखो यहाँ पे जब सबनेटेड नेटवर्क का जब आईपी डालोगे तुम, ठीक है? तो ये जो होगा आईपी एड्रेस तुम्हारा पीसी का होगा, ठीक है? तुम्हारा जो होस्ट है, जो तुम्हारा आईपी जो रहेगा ना, उसका यहाँ पे डालना है डिटेल। सबनेट मास्क जो होगा वो चेंज करेगा। एक चीज ध्यान देना, क्योंकि सबनेट मास्क हमने देखा है कि क्लासफुल रहेगा तो ठीक है, 255.255.255.0 डाल दिए। लेकिन जब न्यू सीआईडीआर वैल्यू जब बनेगा, मान लो स्लैश 3 बिट सपोज तुमने ले लिया है, किधर से, होस्ट से ले लिया, तो 24 था, तो अब कितना बन गया, 27 हो गया, राइट? तो 27 को लास्ट वाले ऑक्टेट में वैल्यू कितना होगा, 3 बिट फर्स्ट, 3 बिट 1 कर दिया मैं, बाकी को 0 किया, तो कितना आएगा बोलो तो, टेल मी। 2 बोलो। 224। 224 आएगा लास्ट ऑप्शन। 24, तो ये वाला डालोगे तो सबनेट मास्क में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे 224 रहेगा। और ये सबके लिए होगा, क्योंकि हम नेटवर्क के बेसिस से सबनेटिंग कर रहे हैं, हम होस्ट के बेसिस, हम लोग सबनेटिंग कर रहे हैं, नॉट वीएलएसआई नहीं हम यूज कर रहे हैं, याद रखना। जो वीएलएसएम जो हम यूज कर रहे थे ना, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, तो वीएलएसएम का कंसेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे ओनली सबनेटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग ओनली सबनेटिंग कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, होस्ट के रिक्वायरमेंट पे सबनेटिंग यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क पे किया जा रहा है, ठीक है? तो वो चीज ध्यान में रखना है। तो ये जो अगर नेटवर्क के बेसिस से कर रहे हो, तो ये सबनेट मास्क जो है ना, ये फिक्स हो जाएगा, सबके लिए होगा, सारे पीसी का यही सबनेट मास्क रहेगा, क्योंकि चेंज तो करेगा नहीं। वीएलएसएम अगर यूज करते तो चेंज करता सबनेट मास्क, लेकिन ये तो हम केवल सबनेटिंग कर रहे हैं, तो हमारा ये वैल्यू फिक्स रहेगा। फिर जो डिफॉल्ट गेटवे होगा, वो भी पहला आईपी को डाल देना डिफॉल्ट गेटवे, जो सबनेटेड नेटवर्क बनाओगे
पहला जो .0 वाला जो नेटवर्क होगा वो तो नेटवर्क को ही डिफाइन करेगा, लेकिन उसके बाद वाला जो फर्स्ट आईपी होगा यूजेबल फॉर द होस्ट, वो फर्स्ट आईपी को डिफॉल्ट गेटवे असाइन कर देना यहाँ पे, ये राउटर के इंटरफेस पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एड्रेस होगा वो पीसी को असाइन करना, और वही डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे डालोगे। ये तुम लोग ट्राई करना। लेट्स सी दैट हाउ मेनी यू आर गोइंग टू कंप्लीट। सर तो फिर जो इनबिल्ट 10.0.0 20.0.0 30.0.0 था उसको भी यूज नहीं करेंगे मतलब नहीं जो उसको आज भी, दिए नहीं उसको भी चेंज कर देना, क्योंकि हमने जो 6 मतलब नेटवर्क पूरा। लिया है तो हाँ पूरा, इसलिए तो बोला न्यू करना पड़ेगा तुम लोग को, क्योंकि हम जब न्यू करेंगे जो हमारे पास 6 नेटवर्क जो आ रहे हैं वो तो इसको भी काउंट करके आ रहा है ना, ये नेटवर्क ये वाला ये तो 3 ये हुआ, और ये 3 3 जो स्विच के लिए एक और लगा रखा है जो इंटरफेस यहाँ पे, उसके लिए एक एक बना, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 6 हो रहा है। तो 6 conclude including that your router to cloud as well as router to switch. So total 6 network. On that basis you have to do the subnetting, and all the IP, the 10.1 31 21, all the things will be changed. Okay, it will take some time to do the calculation and try to complete it. I'll give you more time for this. 2 days will be there, so whenever you will get time, sufficient time, you can go ahead and complete this assignment. I'll post सर in the आपने जो सबनेट का आईपी एड्रेस दिया ये एंटायर सबनेट का है, राइट? इसको यूज करना है पूरा नेटवर्क में, क्योंकि वीएलएसएन तो नहीं करते। नहीं, मतलब ये जो दिया है मैंने आईपी, ये एक तुम्हारा एक रेफरेंस आईपी है, इसी पे सबनेटिंग करोगे जैसे तुम लोग पहले क्लास में करते थे ना, थ्योरी हाँ, क्लास मतलब वगैरह। इसी इसी के रेंज में आईपी असाइन यस करना है बस। जैसे नॉर्मल में करते थे। या ऑन द six subnets you have to create, and accordingly you have to assign IP to the each and every PC accordingly. Okay, so just try. We'll see you in the next class. Remaining things you can save that the previous configuration, so that will help you for the new configuration. So today ma'am class is not there. Tomorrow I think she will take. We'll see you next class.